Hello everyone, I am Dr. Ritu Tiwari and I have completed my MBA degree. I have also cleared my UGC NET examination in the year 2013 in Human Resource Management, Industrial Relation and Labor Law subject. Apart from this, I have also completed my PhD in the subject Commerce and I have total 10 years of teaching experience with a management institute. So today I'm going to teach you the UGC NET examination paper 1 topic. We will start with the unit 1 as UGC NET has changed, or you can say has added various new topics in the syllabus. So we will cover the whole syllabus one by one. First unit, if I talk about first unit, it is about teaching aptitude, which talks about the process of teaching, then the various levels of teaching, the measures, how assessment measures is done by the teachers, and all these things. We will discuss all the topics, right? So I am starting with the first topic, that is level of teaching, right? Before going to the level of teaching, I just want to discuss you all, I want to ask this question to you all: what do you mean by a teacher? Okay, so as you all know, after clearing UGC NET examination, you all are going to be a teacher, or rather I say professor, assistant professor, right? So before starting the topic, I just want to know, according to you, what is a teacher? Okay, fine. So some people are saying that teacher is a role model. Good. Some are saying that teacher is a person who impart knowledge. Again, very good. So different people have different opinion about a teacher. So everyone is right, I'm not saying this is wrong, but here I want to express you, I want to tell you first the definition of a teacher, right? So teacher is the one, it is an expert who is capable of imparting knowledge, right, that will help learner to build, identify and acquire skills that will be used to face the challenges in life. The teacher also provides to the learner knowledge, skills, and values that enhances development, right? This is the definition of teaching. Apart from this definition, apart from sharing knowledge with the student, teacher also perform various roles in the classroom, right? So teacher can be a role model also, isn't it? कुछ बच्चे होंगे जो आपको देख करके आपके जैसा बनना चाहेंगे, right? Apart from this, teacher also create an environment of learning, right? जो टीचर है वो क्लासरूम के अंदर एक इन्वायरमेंट भी क्रिएट करता है, सो दैट एक ऐसा environment create, environment plays a very important role if we talk about learning. So it is the duty of a teacher to create an environment where a student can easily acquire skills or learn knowledge, right? Apart from this, teacher also work as a mentor, right? सिलेबस को अगर मैं हटा दूं, सिलेबस के अलावा भी एक टीचर क्लासरूम के अंदर बच्चों की जो
प्रॉब्लम्स होती हैं related to career, related to guidance, and it can be a personal problem as well, right? Teacher is the one who is going to mentor the student, right? Then apart from this, there is one more thing that a teacher do, that he listen to every problem of the student and tries to troubleshoot that problem, right? So a teacher also work as a troubleshooter for the student. So you can say, apart from imparting knowledge को impart करने के अलावा भी टीचर क्लासरूम के अंदर डिफरेंट डिफरेंट रोल्स परफॉर्म करता है. सो you can say teacher plays a very important, or you can say teacher is a vital element for the process of learning. अगर हम लर्निंग की बात करें तो बिना टीचर के लर्निंग पॉसिबल नहीं. Is it clear? So next is, okay, now these are the roles a teacher perform. We have already discussed all these roles, like like teacher imparts knowledge. It also, teacher also creates classroom environment. I have already cleared you. He also work as a role model, as a mentor, and as a troubleshooter. Sign of trouble is what? He identify each and every trouble faced by the student during the teaching process, and he try to resolve that query. Is it clear? I guess it is very much clear to you all. Now we will move further. So wait a minute. I'm going to the next slide. Yes. Now come to the process of teaching. Teaching की क्या process होती है? Here we are going to discuss the process of teaching, right? If I talk about the process of teaching, it is a two-way process, right? And there are a number of elements which are included in the process of teaching. The first element we have already discussed, that is a teacher, right? Teacher. Then second element is learner. There are, I have mentioned in the slide, there are a total 13 elements of teaching process. So teaching process is what? It is a, you can say it is a relationship between a teacher and a student, right? In this process, teacher imparts knowledge and learner is the person who is grasping the knowledge. Clear? So two element, I guess, first two elements are very much clear to you all. The teacher, the person who is imparting the knowledge, and the learner who is grasping the knowledge imparted by the teacher, right? Now there are other elements as well. And one more thing I want to add, the learning process is, it is a two-way process. Two-way means what? Two-way is two-way process. You can write somewhere. It is a two-way process. Why it is a two-way process? Because जो टीचर है वो क्या कर रहा है? He is imparting the knowledge and learner is grasping the knowledge. Two-way is what? टीचर की अगर कोई चीज टीचर ने नॉलेज इम्पार्ट करी, ठीक है, एंड अगर लर्नर के दिमाग में कोई क्वेश्चन आता है, कोई क्वेरी है, he can ask to the teacher. So this is what? It is a two-way process. And if we talk about learning process, it is very much important that both the parties should take part in the process of learning. अगर दोनों में से एक भी पार्ट काम नहीं करेगा,
ठीक है, अभी हम लेवल्स पढ़ेंगे, उनमें हम पढ़ेंगे कि किस लेवल की टीचिंग में टीचर ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है, लर्नर पैसिव पैसिव रहते हैं, टीचर एक्टिव रहते हैं, एंड वी विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स इन coming topics, right? So I just want to say that two-way, I guess it is very much clear to you all ki what is a two-way process. Okay, so teaching is what? It is a two-way process. You can write down somewhere. And it is a cyclic process also. ये process जो है वो चलती ही रहती है इसी तरह की. Clear? Now we will talk about the other elements of the teaching. Teacher और learner के बिना तो teaching possible है ही नहीं. These are the two main important elements of teaching. But apart from this, there are some other elements as well जो हैं तो बहुत छोटे छोटे. ठीक है, आपको लगेगा कि इनकी क्या ही जरूरत है, but they plays a very important role in the whole process of learning. Like करिकुलम. जब हम लर्निंग की बात करते हैं तो एक करिकुलम और सिलेबस का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है. देन आता है आपका एजुकेशनल मेथड. ठीक है, कौन कौन से मेथड से यूज करके एक टीचर पढ़ाएगा. जैसे आजकल आप पहले क्या होता था, ब्लैक बोर्ड से पढ़ाते थे टीचर्स. अभी क्या है, मैं देखो आपको कैसे ले रही हूँ, ऑनलाइन क्लास ले रही हूँ ना. आई एम यूजिंग ऐप, जूम ऐप, थ्रू विच आई एम टेकिंग द क्लास. तो दीज आर व्हाट, अभी स्मार्ट बोर्ड्स आ गए हैं क्लासरूम्स के अंदर. दीज आर दी वेज थ्रू विच अ टीचर टीच. क्लियर? नाउ कम टू दी असेसमेंट एंड इवेल्युएशन. असेसमेंट एंड इवेल्युएशन इज व्हाट, जो आपके एग्जामिनेशन होते हैं, आपको किस ढंग से असेस किया जाता है, वो डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट डिफरेंट असेसमेंट होता है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे. देन लर्निंग के क्या क्या सोर्सेज हैं, लाइक बुक्स के थ्रू आप लर्न कर सकते हो, है ना. देर आर सम ऑनलाइन मटेरियल्स इज ऑल्सो अवेलेबल. तो देर आर दीज व्हाट आई मीन ऑल दीज आर कॉल्ड व्हाट, लर्निंग रिसोर्सेज. कहाँ से आप लर्न कर रहे हो. देन क्लासरूम का एनवायरनमेंट, इट ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. क्लासरूम का एनवायरनमेंट अगर अच्छा नहीं होगा, in that case also, no, here I'm talking about both the types of environment, physical as well as psychological. Is it clear? दोनों भी environment आपका अच्छा होना चाहिए. अगर क्लासरूम के अंदर बहुत ज्यादा नॉइज है, in that case also, physical environment, you will not be able to learn the things easily. ठीक है, apart from this, टीचर इज बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे हैं क्लास के अंदर, इन दैट केस आल्सो साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट इज नॉट गुड. ठीक है, इन दैट केस आल्सो यू विल नॉट बी एबल टू learn the things easily. Now come to the next element, that is technology. Technology is what, like I'm using internet through which I am taking class. I'm using various apps. This is what, this is all technology. Now come to the next one, that is feedback and reflection. Feedback is what, आपको रिजल्ट मिलता है. आपने अभी तक जितने भी क्लासेस, सभी लोग पढ़ पढ़ के यहीं पे पहुंचे होंगे. ठीक है, ग्रेजुएशन कर लिया होगा. तो आपको असेसमेंट के बाद आपको क्या दिया जाता है, फीडबैक दिया जाता है और रिफ्लेक्शन यू कैन से, जिससे आपको पता लगता है कि आप कहाँ पे खड़े हो, कितनी चीजें आपको आती हैं. ठीक है, दिस इज व्हाट फीडबैक और द रिफ्लेक्शन. इट कैन बी वर्बल, इट कैन बी नॉन वर्बल, इट कैन बी ऑफ एनी टाइप. We will discuss this also in various levels of teaching. Now come to the next one, that is communication. Communication is what? Communication is verbal communication और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. आप मुंह से बोल करके भी पढ़ा सकते हो, आप पीपीटीज यूज कर सकते हैं. देयर आर डिफरेंट डिफरेंट वेज. अपनी बात को आप पिक्चर्स यूज करके भी बता सकते हैं. दिस इज व्हाट द वेज ऑफ कम्युनिकेशन. अपनी चीज को किसी तक पहुंचाना इज व्हाट कम्युनिकेशन इज. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज मोटिवेशन. अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. टीचर मोटिवेट द स्टूडेंट. वो सेल्फ मोटिवेटेड तो होता ही है कि मुझे बच्चों को अच्छा देना है, अच्छा कर, मुझे तो अपनी ड्यूटी अच्छे से करनी है. साथ में जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको भी वो टाइम टाइम पे मोटिवेट करता है. अब मोटिवेशन डांटना भी एक तरह का मोटिवेशन ही है. इट इज अ काइंड ऑफ नेगेटिव मोटिवेशन. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस प्रेज है, कुछ प्राइज मिल रहा है आपको, दिस इज अगेन व्हाट मोटिवेशन. अडेप्टेबिलिटी. अडेप्टेबिलिटी इज व्हाट,
कितना अडॉप्ट कर रहा है लर्नर और द स्टूडेंट, उसकी अडॉप्टेबिलिटी कैसी है, you know? अगर कोई बच्चा क्लास के अंदर बहुत ज्यादा अ, उसको समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, बीइंग अ टीचर यू हैव टू जज द अडॉप्टेबिलिटी ऑफ दैट स्टूडेंट एंड यू हैव टू guide that to student. Okay, so this is what the adaptability is, and the last one is assessment of learning style. ये मेरे पार्ट पे रहेगा, आई मीन टीचर के पार्ट पे रहेगा कि आपका स्टूडेंट से भी फीडबैक लिया जाता है, आपने दिया होगा बहुत सारे टीचर्स का, है ना। तो दिस इज व्हाट असेसमेंट ऑफ लर्निंग स्टाइल, कि मेरा जो टीचिंग स्टाइल है, प्रोबेबली आफ्टर दिस क्लास यू आर गोइंग टू असेस मी, ठीक है, यू आर गोइंग टू गिव द फीडबैक कि आपका टीचिंग स्टाइल किस तरह का है, पेडागॉजी किस तरह की है। तो दिस इज व्हाट द असेसमेंट or of learning style or teaching style. Is it clear? I guess it is very much clear. So we have discussed 13 elements of learning process. कौन से वो element है? Teaching, teacher, learners, curriculum, then educational methods, then assessment and evaluation, then learning resources, then classroom environment, technology, feedback, communication, motivation, adaptability, and assessment of learning style. तो ये सारी चीजें they all will come under the process of learning. I guess it is very much clear to you all. So shall I move further? If you have any query, you can ask. I am very much here to solve your queries, right? Okay. So I guess there is no query. That means मैंने अच्छा पढ़ाया, सबको समझ में आ चुका है, ठीक है, मैं ये मान सकती हूँ ना आप लोग की साइड से। तो shall I move further? Okay, fine. So now we'll come to the main topic जो सिलेबस में लिखा हुआ है, that is level of learning. क्लियर? तो यहाँ पे हम लोग लेवल ऑफ लर्निंग की बात करेंगे। बेसिकली देर आर 3 लेवल्स ऑफ लर्निंग, जो यहाँ पे आपको दिख भी रहे होंगे स्लाइड्स पे। पहला है मेमोरी लेवल, सॉरी, पहला है आपका मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। क्लियर है? क्लियर है आई गेस। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, इसको हम थॉटलेस टीचिंग भी बोलते हैं। सेकेंड है आपका, सेकेंड इज अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, थॉटफुल टीचिंग जिसको हम बोलते हैं। एंड थर्ड है आपका रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, जिसको कि हम बोलते हैं अपर थॉटफुल लेवल, ठीक है। तो हमें इन 3 लेवल्स को अलग अलग पढ़ना है। इन 3 लेवल्स के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। जैसे मेमोरी लेवल की अगर मैं बात करूँ, आपको मैं आइडिया देती हूँ। जैसे मेमोरी लेवल की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे ज्यादा फोकस आपको नाम से ही पता लग रहा होगा, मेमोराइजेशन पे किया जाता है, मेमोराइज कराने पे किया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा छोटे बच्चे जो होते हैं, उनको बार 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 टीचर क्या करवाती है, रिपीट करवाती है चीजों को, सो दैट उनको मेमोराइज हो जाए। वो अपने लॉजिक्स नहीं लगाते, कुछ नहीं करते, बस सिर्फ वो चीजों को क्या करते हैं, याद करते हैं। दिस इज व्हाट द फर्स्ट लेवल ऑफ टीचिंग। अभी हम डिटेल में इसका सारा कुछ डिस्कस करेंगे। नाउ कम टू द अंडरस्टैंडिंग लेवल। अब बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं, सेकेंड क्लास से उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल डेवलप होना शुरू हो जाता है। अभी वो लर्न तो कर ही रहे हैं, मेमोराइज तो कर ही रहे हैं चीजों को, साथ में क्या कर रहे हैं, चीजों को अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं। उनके अपने लॉजिक्स होते हैं कि किस तरह से चीजों को, ये अगर ऐसा कहा है तो क्यों है, ठीक है, जिसको हमने थॉटफुल टीचिंग का नाम भी दिया हुआ है। एंड थर्ड आपका क्या है, रिफ्लेक्टिव लेवल। रिफ्लेक्टिव लेवल ये हायर लेवल टीचिंग होती है, हायर लेवल टीचिंग प्रोसेस होती है, टीचिंग होती है। इसमें क्या होता है आपका, इसमें बच्चों को क्या किया जाता है, टीचर का काम इसमें बहुत कम हो जाता है। इसमें बच्चों को सिर्फ गाइड करने का काम रहता है। जैसे जो आप जिस लेवल पे हो, यू आर एट दिस लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। So we will discuss all the levels one by one, and इसमें से आपके बहुत सारे questions आते ही आते हैं लेवल ऑफ टीचिंग में से। We will in next classes we will discuss the MCQs
previous year MQ PYQs also in the class, right? So stay tuned with me, and I will meet you in the next lecture. Thank you. I hope you like the lecture. So मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन टेक केयर, बाय, एंड प्लीज रिवाइज ऑल दीज थिंग्स. ठीक है, आज आपने पढ़ लिया, आपको लगेगा सब कुछ क्लियर है, सब कुछ है, बट आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आप सब कुछ भूल जाओ. ठीक है, सो रिविजन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. जब हम पढ़ाई की बात करते हैं तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल है आपका रिविजन. सो आज की क्लास यहीं तक. टेक केयर एंड बाय. विल मीट इन नेक्स्ट क्लास. बाय.